Good evening. Hope you will. All right. So the question is again, this is a past paper question. I don't remember the timestamp exactly. The question is that you are going to count how many times, let's say, A appears in the string inputted by user. ठीक है? If that is what the user, हाँ, ठीक है. So हम A को count कर लेते हैं. Let's say I have a word. Word को कर लेते हैं. So I have a word advantage. Now there's 1, 2, 3 A's in it. ठीक है. अब how do we count this using pseudocode? So उसके लिए आपको insert वाले document में जाना होगा. Now there is a function called mid here. So what does mid do? Mid will return, given a certain string, mid will return starting from this second index, it will get you 3 characters. ठीक है. So if I show you this, यहाँ पे इसको ले आते, अगर if I save this in x, तो x में अगर जब मैं value output करूँगा x की, this would have gotten me a b c. So because we are starting from the second character and then I'm saying get me 3 characters, so this would get you b c d, sorry not a b c, b c d. So हमें mid use करना है. How do we count this? एक तो हमारे पास insert वाला function आ गया, again the document is given to you. So we basically, अगर मैं इसका, if we come up with a solution for this, अगर इसको मैं words में लिखूँ, so we have to loop through the string each character in a string. ठीक है. पहले तो you have to come up with the way how do you get each character in a string. So how do I separate out a d v a, इस तरह करके मैं इसको कैसे separate out करूँ. Then you have to check if character is equal to a. If it is, then you're going to increment the count. ठीक है. So ये basic सा इसका program है, but इसकी implementation थोड़ी सी tricky है. So let's start with the first part. How do we loop through each character in the string? So in order to loop through each character in the string, we'll look at the mid function. So पहले हम एक loop लगाते हैं for I 1 2. So advantage में जितने भी number of characters and that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, it's 9. So we won't write 9. We'll just write length of word. Again, length क्या है? Length is another function given in the insert document. This returns you the number of characters in a string, and always remember this works for a string, not an integer, not a real, not a boolean. Okay, so अब हमारे loop automatically जितने भी characters हैं उस time चल जाएगा उतने times के लिए. Now you have to get each character. So how do I get a character out of it? So उसके लिए I have to use mid. Mid में I have the, so I'm looking at the word that I have, which is advantage. And I'm going to start from the first index. जो I की value है वो है initially 1 पे. So I want the first character, then second, then third, then fourth. So I will be doing that. And then I only need one character. Okay. So again, what does mid do? Mid will return you this many number of characters. So third parameter है ना y वाला. So इसमें जितने आप value लिखोगे उतने आपको characters वो दे देगा from the start. So this literally means, so I'm getting rid of it. So this literally means get me each character. ठीक है. Okay, अगर मैं इस 1 की जगह 2 कर दूं, so this would mean get me 2 characters. If I make it 3, it will become get me 3 characters. So let's say अगर मैं 2 रखता हूँ, so how would it work? So पहले आपके जो variable उसमें value आ जाएगी ad, then dv, then va, then an, then nt, then ta. So यहाँ पे, so since we only need one character at a time because we are comparing for 1, so I can just leave it to 1 here. So get me 1 character. Okay, now once you have each character, so यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा, then d आ जाएगा, then v आ जाएगा. तो it's pretty simple now. You're just going to compare if the character is equal to a. If that is the case, तो आपने इसके count को increment कर देना by 1, and then you end if, and then outside the loop you will output a appeared, या frequency of a comma count, इतने times a appear हुआ. That's it. और अगर हम इसको Python में quickly साथ देख लें, again Python is not part of your A syllabus at least. So यहाँ पे let's say I have the same thing here, advantage, and I say for I in word. So Python में ना ये बहुत easily हो जाता है ये सब, उसमें कोई mid वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. So for loop लगाऊंगा तो automatically separate out कर देगा. And then I can simply check if I is equal to, let's say a, then count is equal to count plus 1.
and I'll set count to 0, and then I say once outside print frequency of A, let's say, comma count. So it will tell me frequency of A is 3 in advantage. और इसको साथ हम print भी कर लेते हैं. So frequency of A is 3. Let's change the word. Let's make it maybe Karachi. So it becomes 2. Then Alabama. So this becomes 4. Okay, so it's working perfectly now. So ये इसकी logic है, उसका Python code था. So the part of the question also says you basically had to output the position at which you find the first A. ठीक है? So आपको जहाँ पे first A मिला ना, आपने उस position को भी output करना है. Okay, how do you do this now? So ये देखो, यहाँ पे जब आपका for loop is working, so when it finds A, आपने इसकी count को increment by 1 कर दिया. How can you also save कि किस index पे आपको A मिला है? Is there any way to do that? So let's say यहाँ पे अच्छा advantage की जगह अब हम कर लेते हैं advantage की जगह let's make it I'm looking for a word जिसमें A start में ना आता हो. Dragon. Okay, let's go for dragon. ठीक है? So you check it D is not equal to A, so nothing happens. Then you get R is not equal to A, then you get A, and A is equal to A, so count becomes equal to 1, 0 से 1 हो जाएगा. And since count becomes 1, तो आप यहाँ पे इसको output कर दो, या फिर you can save the position in a variable, और वो variable की position क्या है? I is the loop variable, so I is changing from 1, then 2, then 3, then 4, then 5, etc. So यहाँ पे आपने position में I की value save कर देनी है. And उसके बाद you can also print output first occurrence at index comma position. That's it. We are done. So conditional loops run for a condition, and they will only end once the condition is either satisfied or it's terminated, depending on the type of loop we're using. Unlike in for loop, इसमें हमें ये नहीं पता होता कि आपका loop कब end होगा. So when I say I will jog for 3 kilometers, I will play FIFA for 2 hours, etc. Conditional में the number of iterations are not known, and the loop keeps running based on a condition. So while I'm not tired, I'll jog. While I'm not tired, I'll read, or until I'm bored, I'll study, something like this. Okay, then there are multiple types of conditional loops. सबसे पहले आपके पास आएगा preconditional, and then you'll have the postconditional. So preconditional loop is the loop that checks condition before entering the loop, and code might not execute at all. So let's say इसके आप ऐसे imagine कर सकते हो कि while you have the door key, you can unlock the door. So if you don't have the door key, आप door को unlock नहीं कर सकते, and then you can't do any further steps. And post condition में ये होता है, you check condition at the end. So इसको आप वैसे imagine करो कि open the door, and then you check afterwards until you have the keys. So it checks the condition at the end, and code will execute at least once. This is very important that you know the difference between these two, because इनका exact definition papers में आती है in past papers. कि आपने बताना कि इनमें difference क्या है. So precondition might not execute at all. Post condition, the code will run at least once. Pre में आप शुरू में condition start करते check करते हो at the start of the loop, and post में you check it at the end. And then conditional loops don't have counters like for loop does. Next time नहीं होता है, इसमें आपको individually manually count +1 or count -1 जो भी आपने करना है वो करना है. This is the syntax. So while you have the condition that is true, you will write code, and then you will do and while. ये preconditional है, and post condition में repeat until, और ये आपकी condition आ जाती है. ठीक है. So I'm again keeping the pace a bit fast. So अब जैसे ये question है, sum all the values inputted until -99. So -99 में अब आपको जो values input हुई हैं, इसमें for loop नहीं use हो सकता, because you never know, you don't know when the user will input -99, right? So यहाँ पे आप एक while loop लगाते हो, you input the value, and then the condition is while value is not equal to -99, you keep adding the value, and then you take the input again. If you don't take the input again, it will go into an infinite loop. So very simple example, if you say x, so you say while x is greater than 0, if that is the case, so you will print inside loop. Okay, and then I'm setting x equal to 1. So looks good, but when I run it, ये देखो ये infinite times जो है वो चलना शुरू हो गया. So this is clearly wrong. What you need to do is inside the loop you need to take input again, so that eventually there would come a point कि आप जहाँ पे condition को meet कर दो. So maybe
2 पे, it's fine. But if I input -1, since it's not greater than 0, it should end the loop, and it does. और इसी तरह अगर हम रिपीट अंटिल में इसको करें तो रिपीट अंटिल में इट विल बी द ऑपोजिट. रिपीट अंटिल में आपने पहले टोटल को 0 सेट कर दिया, एंड सिंस यू आर चेकिंग कंडीशन एट द एंड, we have to make sure that we don't end up adding -99 into the total. So there, then we are saying if value is not equal to -99, then and only then you will add that into the total. Otherwise, वो -99 भी आपके वैल्यू में इनपुट कर देगा, and then you check it at the end and then you sum with values. ठीक है, so ये भी हमने कर लिया था क्वेश्चन. आपने कॉन्फर्मेशन पासवर्ड वाला और ये स्क्रिप्ट नंबर गेसिंग गेम एटसेट्रा. ठीक है, सो व्हाइल लूप और रिपीट अंटिल के बस यही है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द फॉर लूप, तो आप समझ लो कि आपको व्हाइल लूप भी ऑलमोस्ट आगे विद डिफरेंट सिंटैक्स, एंड जस्ट उसमें जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है वो जो है वो ऐड होती है. देन वी हैड मेंटेनेबल प्रोग्राम्स. अच्छा, ये बेसिक सी डेफिनेशन है. सो इट इंक्लूड्स द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स. सो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आता है आपके कि व्हाट इज अ मेंटेनेबल प्रोग्राम. सो इसमें फीचर्स होते हैं, ये आपको याद करने हैं बेसिकली. सो मेंटेनेबल प्रोग्राम्स पे आपके पास मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स होते हैं, लाइक कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स. दैट मीन्स कि उनके नेम्स मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स. देन यू कमेंट द कोड दैट यू हैव रिटन, और इसका फायदा क्या होता है कि इट्स बेसिकली द नोट्स फॉर द अदर team members, and so that you can remember your own logic, because you eventually end up forgetting it. And then your code has procedures and functions. So basically modular approach hoti hai, where you break down the problem into smaller sub problems. Isko sub problems kar lete hain. So ये आप लोगों को बस याद होना चाहिए. जब भी they will ask about maintainable program, तो आप ये लिखना है. अच्छा, इसमें there is a very common mistake when the question says कि maintainable program का बताना है. Students end up writing about autocorrect, petty print. So ये कुछ, and then debugger. So these are the features of an IDE. जैसे PyCharm हम लोग यूज करते हैं, ये आगे आता है ये टॉपिक ना, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज ऑल रॉन्ग. दिस इज अ वेरी ऑफ्टन कंफ्यूजन और फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन. ठीक है, सो मेंटेनेबल प्रोग्राम एंड आईडी हैज नथिंग इन कॉमन. इट्स जस्ट कि जब स्टूडेंट्स ने मेमोराइज किया होता है विदाउट रियली नोइंग द लॉजिक, तो फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं. सो मैं क्विकली बता दूं, लोकल वेरिएबल्स जो है ना वो आपके एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होते हैं, उनका लिमिटेड स्कोप होता है. जैसे इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फॉर लूप, तो इट वुड ओनली बी एक्सेसिबल इनसाइड द फॉर लूप. उसको कोई भी फॉर लूप से बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूजुअली द वंस जो कि आपके प्रोग्राम के टॉप पे डिक्लेयर होते हैं, एंड दे आर एक्सेसिबल टू ऑल द अदर components and modules throughout your code. Yes, this is question number 4. Okay, so whenever you get a question like this, you always have to visualize, and I'd already done that for all of you. So यहाँ पे आपने क्या करना था, उसके क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है, that will basically you input all the numbers and sum them until the first 0. So 10 input here, then 5, then 1, and जैसे ही 0 आया तो आपने इनको साथ साथ sum करते जाना, and you would get 16. Now this is the easiest question that could possibly be asked. So आपने क्या करना है, आपका total A जो है, that's the name, total A, हाँ, and total B, इनको आपने 0 सेट कर दिया. तो ये यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट में भी अवेलेबल लिखा हुआ था. Yes, failing to initialize total A and total B. ठीक है, then you have to just run a while loop or a repeat until loop. So you can ask the user to output, enter sequence, and then enter number for sequence, and then you take input into, let's say, val, and then you check while val is not equal to 0. तो आपने क्या करना है, आपने total A के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर देना सिंपली.